Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again, Organic Chemistry by Aleena. So this will be the continuation part to the last video, which was pi sigma pi type delocalization. Okay, so this will be the part 2 of that video. Here we will solve the rest of the question which we could not complete in the previous lecture. So this is the next structure that we have in hand. Okay, this is, let me draw it again. It is not clear here. So this is CH double bond CH2. What is this? There is a specific name of this compound. This is known as styrene. Okay, this is used in many polymers. Okay, you must have heard about beta nitrostyrene or beta chlorostyrene. These are all the monomers which you polymerize to get different polymers. Okay, this is styrene. Okay, now you have to draw resonance structures and hybrid of this structure. So now you have the complete structure with carbon-carbon framework. So there is a choice whether you move these electrons towards the ring or you move the ring electrons towards outside the ring. Okay, so first let us draw the electrons towards the ring. Okay, then this pi bond goes here. Okay, pi sigma pi na, this pi bond shifts its electron density to this carbon to give this structure, double bond CH, single bond CH2, and you get a positive charge here because of course it lacks 2 electrons now because this pi bond has shifted here. This pi remains here, this pi bond remains here as it is. Now this sigma, now you move this sigma electrons, now you move this negative charge फॉरवर्ड. ओके, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिपल्शन होगी, बट इधर नेगेटिव चार्ज को आप शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, जब आप नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज को क्यों शिफ्ट करते हैं? ऑलवेज वी शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑलवेज वी शिफ्ट द सेंटर विच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच. तो ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है. एक चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, खासकर नेगेटिव चार्ज के पास. ओके, सो यू मूव दिस इलेक्ट्रॉन हियर, दिस नेगेटिव चार्ज हियर, सो दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट्स हियर. ओके, so this is the next contributing structure that becomes like this. Okay, double bond CH, single bond CH2, positive. Okay, this is the third contributing structure. Now you are drawing the fourth one. How you are moving this negative charge, this pi bond shifts as a result of this migration, this movement. Okay, you get another contributing structure like this. Okay, double bond CH, single bond CH2. Now you have this negative charge shifts here. When this shifts here, this pi bond has to shift again to the positive charge. Okay, to maintain the rule of drawing contributing structures, which says all structures should be valid Lewis structures, because if you don't move this double bond na, this carbon will have a pentavalency. You see, अगर इधर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड रहने दी और इधर भी शिफ्ट नहीं की, तो इस कार्बन का क्या होगा? इधर 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड्स हो गए इस कार्बन के पास, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. सो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. जैसे आप पाई बॉन्ड को एक जगह बना रहे हो तो दूसरी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगी. ओके, इस स्ट्रक्चर में आपने पाई बॉन्ड इधर बनाई, सो दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड अगेन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हिच वाज बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. ओके, this happens. These are all the contributing structures of benzene. All right, अब आप देखो तो इसका हाइब्रिड बनाते हैं. Let us draw the hybrid. How will you draw the hybrid? अब इन contributing structures के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर बन गया CH, single bond CH2. ओके, ये तो ब्रैकेट से बाहर आ रहा है. ओके, this is the hybrid that I am drawing. So here you have a double bond character, here also you have a double bond character, and on a benzene ring you have a circular, you have pi electron density
throughout. Okay, so you draw it with circle. So this is it. Now charge separation. Let us talk about charge separation. In this case, this carbon will have a partial positive. Okay, this, because this was unsymmetrical, so we are drawing partial charges. We are showing the partial charges in the hybrid. This will have a partial negative, this will have a partial negative charge, and this will have a partial negative charge. You can draw the other way also, from the benzene ring towards this towards this carbon, but that will be another set of contributing structures. Here I have drawn these contributing structures, so according to these contributing structures, this will be the hybrid with partial negative charges on the, if this is the substituent, so partial negative charges on the ortho and para position. You know, the position just next to the substituent is known as ortho. This is all ortho, this is ortho, this is para position. These positions are meta. Okay, I hope this is clear. Okay, next structure, this is benzene with a cyanide group. Okay, so here this is an unsymmetrical structure, and this you don't have a choice of drawing resonance contributors in this direction towards nitrogen and from nitrogen to benzene ring. Okay, you don't have a choice because there is an electronegative element present. Electronegativity order क्या होता है? Fluorine is the most electronegative, then oxygen, then chlorine, then nitrogen, right? ये होता है fluorine, oxygen, chlorine, nitrogen. Nitrogen is an electronegative ना. These are top 4 most electronegative elements in the periodic table. So nitrogen being more electronegative, it will pull electron density towards itself to give a positive set of, so to give a stable set of contributors. Okay, so अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूटर तो उसके पुल करने से ही आ जाता है. ओके, आप देखो डबल बॉन्ड एन, दिस ट्रिपल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड मैंने बताया था, एक पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होती है ट्रिपल बॉन्ड में से, द अदर रिमेन्स अ लोकलाइज्ड बॉन्ड. सो दिस, यहाँ नाइट्रोजन के पास पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, सो अ नेगेटिव चार्ज कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, चार्ज सेपरेशन हैपेंड. ओके, now to stabilize this positive charge, this pi bond comes here. Okay, when this pi bond comes here, a positive charge is generated here, a double bond comes here, and then the positive charge from this carbon has come to this carbon. Okay, now next structure, what will be the next structure? This pi bond shifts here to stabilize this positive charge. Okay, a positive charge is hence generated here, a double bond comes here, here double bond C, double bond N negative. Okay, now to stabilize this positive charge, this pi bond comes here. Okay, pi bond comes here, a pi bond here, a positive charge comes here because this pi bond has shifted here. Okay, C double bond N negative. Now this pi bond will stabilize this positive charge by moving from this carbon to this carbon towards the ring. Okay, so this is the next contributing structure. When this pi bond shifts here, this nitrogen, the negative charge comes back in the form of a bond, and you have a cyanide group back in the position as it was in the initial structure. So these are all the contributing structures of okay. So these are all the structures of, these are all the contributing structures of this compound. And the hybrid you can draw very well. You can draw the hybrid as, of course, when there is a benzene ring, there will be circulation of the pi electron density. Then you have C double bond N, because the other pi bond is delocalized, so I'm drawing that pi bond with dotted as dotted line. Here also you have some double bond character development because it was here. Okay, just contributing, हर contributing structure का contribution होता है, इसलिए हम हर structure को देखकर ही
अपना कॉन्ट्रीब्यूट हाइब्रिड बनाते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट चार्ज सेपरेशन. इफ यू सी देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द हाइब्रिड ऑफ दिस एंड जो आपने बेंजाल्डिहाइड का बनाया था उसके हाइब्रिड में भी सिमिलैरिटी है. बेंजाल्डिहाइड का हाइब्रिड कैसे बनाया था आपने? यू ड्रू द हाइब्रिड एज दिस, partial negative, partial positive on this carbon and hydrogen here. Okay, and you had partial positive here, partial positive here, partial positive here. Okay, अब देखो रिंग के ऊपर जो भी partial charges development है it is same in case of this structure and in case of benzaldehyde. Okay, partial positive in at ortho and para position. ठीक है, जब भी ऐसा होता है, ठीक है, अब देख रहे हो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स ने सेम डीलोकलाइजेशन की और बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है ऑर्थो और पैरा पे, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ सिमिलर होंगे. ओके, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स को इफ यू सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. एंड जब ऐसा होता है, जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द रिंग, ओके, अवे फ्रॉम द रिंग, अवे फ्रॉम द रिंग, okay, this electronegative element has pulled the electron density away from the ring, hence you call this group as a group showing minus m effect. ठीक है, minus m effect means minus mesomeric effect, a negative mesomeric effect. ठीक है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, तो यू से दैट सब्स्टिट्यूएंट विल शो अ नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट. ओके, ऐसे ही बेंजाल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप था, ओके, एल्डिहाइड ग्रुप था और एल्डिहाइड ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और उसने बेंजीन रिंग के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट किया और खुद नेगेटिव चार्ज ले लिया. सो दिस ग्रुप विल ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ ग्रुप शोइंग माइनस एम इफेक्ट. ओके, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, अदरवाइज जब आपके पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं, a group like this which makes the benzene ring more electron rich. बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, बट अगर ऐसे ग्रुप्स आ जाएं जो बेंजीन रिंग को और इलेक्ट्रॉन रिच कर दें, यू सी ना हियर यू हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट. ओके, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट. सो दीज विल बी कॉल्ड एज ग्रुप्स शोइंग प्लस एम इफेक्ट. ओके, दे गिव ऑफ देयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द रिंग. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और simply electron density, just write simply electron density towards the ring. Groups which push electron density towards the ring are called electron donating groups or groups with plus m. When you are talking with respect to mesomeric effect or resonance, the electron donating groups are groups which push electron density towards the ring. Okay, and when you are talking in terms of inductive effect, they are just groups which donate their electron density through sigma bonds. Okay, there is a pi involvement in resonance. Okay, but there was no pi involvement in inductive effect. Either this is a group which shows minus m effect, and because it shows minus m effect, it is an electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group. And cyanide and ये सारे ग्रुप्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इंडक्टिव इफेक्ट में भी सेम होते हैं और रेजोनेंस में भी सेम होते हैं. नाउ यू हैव दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ कीटोन. ओके, दिस इज अ कीटोन. तो इधर भी क्या होगा, आई एम नॉट ड्रॉइंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, यू नो, जैसे बेंजाल्डिहाइड का बनाया था. फर्स्ट, this oxygen being more electronegative than the carbon framework, it pulls the pi electron density towards itself, और इसकी वजह से इधर शिफ्ट होंगे ये pi electrons to stabilize the positive charge that will be created here. Then to stabilize positive charge created here, this pi bond will shift here, and then circulation of electrons takes place, and you can draw the hybrid very well. Okay, I'm leaving this question to you, okay, as homework. This is a homework question, you try it yourself. Now let us talk about this compound. This is also a ketone. Okay, there are two phenyl groups attached to this one side of the carbonyl group, and the other side also has a phenyl ring. Okay, so now ये जब
आपको ये तो पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ये कार्बोनिल, ओके, -m इफेक्ट दिखाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी अपने पास लेता है, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस कार्बन बिकम्स गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव, एंड टू स्टेबलाइज इट, ये रिंग भी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकती है और ये रिंग भी दे सकती है। व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू ग्रुप्स which can stabilize a charge or a group, ये दोनों इंडिविजुअली इधर डीलोकलाइज हो सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कर सकते हैं, बट इनका आपस में there is no delocalization between these two rings. Okay, when such thing happens कि 2A is in resonance with B, let me write it mathematically like this. Okay, A is in resonance with B and C is also in resonance with B, but A is not in resonance with C. Okay, if this is A, this is C, and this is B. A is in resonance with B, C is in resonance with B, but A and C are not in resonance with each other. When you get this combination, you call the resonance as, or the conjugation as, cross conjugation. Okay, दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अभी तक जो आपने एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें ऐसा कुछ नहीं था कि दो ग्रुप्स साथ साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते थे, एक ही डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो रही थी, उसको कहते हैं अबव ऑल एग्जाम्पल्स दैट आई टॉट यू अबव, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर कॉन्जुगेशन। ओके, all these examples are this example, even this example, and this example also, except this. All these are examples of linear conjugation. Okay, there is a difference in the stability of structures with linear conjugation and cross conjugation also, that I'll tell you later. Okay, this is really important for students preparing for JAM, or okay, you have to know the difference between linear conjugation and cross conjugation. The JEE people can also remember it. Just a second. Okay, so now I told you now, there are some groups are there which are electron withdrawing groups in inductive effect, they show a -I effect, but they are electron donating group and show a +M effect in resonance. There are some groups जो inductive effect में as electron withdrawing act करते हैं, but when you talk about resonance they show a +M effect. Examples of such groups are hydroxide, OMe, ether groups, and also halogens. Okay, halogens, जिन भी ग्रुप्स के पास लोन पेयर होता है, ओके, जिन भी ग्रुप्स के पास लोन पेयर होता है, हेलोजेंस ऑल हैव लोन पेयर, वो +M दिखाते हैं। ओके, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी रहता है। ओके, यू कैन ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स of phenol by delocalizing this lone pair on the ring. Okay, you push this oxygen, when oxygen pushes its lone pair towards the ring becomes electron rich, और जब electron rich हमारी ring बनती है, when the ring becomes electron rich and the substituent becomes electron deficient, this is when we call the substituent as electron donating in resonance. Okay, or the group showing +M. ठीक है, अब we will talk about their resonance and their contributing structures when we will start with pi sigma lone pair type delocalization. In this video we have completed pi sigma pi type delocalization. I hope you got all the questions and I request you all to please practice whatever question I have given you as homework. Okay, and thank you for watching. I would like to request you to please subscribe to my YouTube channel, like this video and share it as much as you can. We will meet in the next video and we'll start with a different case of delocalization, that is pi sigma lone pair. Okay,
and pi sigma positive also if we get time. Okay, so thank you so much for watching. Goodbye for now.